So they are here today. Next month you'll find them at another place. ये तो हम लोग झुंपड़पट्टी के लोगों को देख रहे हैं कि बद्दू लोग हैं जो A big, very big Yahudi settlement that the Yahudi built in the west bank of Jordan, and the land belonged to the Palestinians. जो मकान देखे आगे बाजू की तरफ वो भी यहूदियों ने बनाए हैं, वहाँ सेटलमेंट किया हुआ है। हालांकि ये एरिया सब पैलेस्टाइन का है। Buildings to the right and to the left, Palestinian homes near Jerusalem. जब जेरूसलम के पास आ रहे हो, ये जो दाहिनी तरफ और जमीन पर देख रहे हैं वो मकान सब पैलेस्टाइन वालों के हैं। بفضل لك نروح على المنظر احسن وبعدين سلمان الفارسي مشان تجي كمالات. Side of the Mount of Olives, and this East side Mount Wali के हैं। yeah, this the old road leads up to the top of the Mount of Olives, where we are going to stop to view the city, view Al-Aqsa Mosque, take some pictures before we visit the tomb of Salman al-Farisi. Is Jabal al-Tur here somewhere? Are we going there or? Yes. When I say the Mount of Olives, that's Jabal Zaytun. This is the back side of it. This is the back side of it. جبوني وطول السنين وهذا البلد الأمين. Of the olive trees were on the Mount of Olives. Those are olive trees to the right, were cut off by the Ottoman Turks, and that was during the First World War, because the Ottoman Turks, they have been using the wood of the olives as a fuel for their trains. That's why they came and cut the most of the olive trees were here. पहले जैतून की जगह बहुत थी, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, दो की लोग आए थे यहाँ पे, वो लोग इसको इस्तेमाल करते थे अपने फ्यूल के लिए। Stop to view the city. Give you 10 minutes to take pictures. When we stop at that place and you see a mosque with a gold dome, we call that mosque the Dome of the Rock. And then there is another mosque with a black dome, that's Al-Aqsa. Within the area of the first and the second mosque is the place where the Isra and the Mi'raj it took place. अभी ये बस खड़ी करेगा जहाँ 10 मिनट। Sisters, as much as we have nice, friendly, honest people in this country, but among every nations in the world, we have those pickpockets. So take good care of your purses and your money, and thank you. We are on the more to come. चलो चलो करीम भाई जल्दी करो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। Yes, 1 minute, yes. एक मिनट पे अभी बताते हैं हजरत। When everyone comes. थोड़ा नजीक आ जाओ ताकि सुन सको आप। सुनो भाई। ये जो सुनहरा गुंबद आप देख रहे हैं, सुनहरा गुंबद, ये है मस्जिद सखरा। ये ख़ास जगह वो है
जहाँ से हुजूर की मेराज हुई। करीब जाएंगे तो वहाँ पर बुराक के पैरों का निशान भी मिलेगा। बुराक जिस जगह बंधा गया था वो निशान मिलेगा, और वो रास्ता भी मिलेगा कि जिस रास्ते से हुजूर नीचे से ऊपर तशरीफ़ ले गए। ये है मस्जिद सखरा। और ये इधर जो आप देख रहे हैं, ये सियाह गुंबद है, ये पूरा ये है मस्जिद अक्सा। जब करीब से आप जाएंगे तो और भी अच्छी समझ पैदा होगी। और कुछ वहीं पर हज़रत सुलेमान का भी वो है, वो सब वो करीब में जाएंगे। अभी तो दूर का मंजर जो आप फोटोग्राफी करना चाहते कर। Okay. Yeah, you can speak now. No, okay. This is the east side of Jerusalem, the Palestinian part of the city. Before the war started in 67, Jerusalem was divided. This part of it was in Palestine. The other part where the big buildings are, that is the Israeli side of the city of Jerusalem. Beside the Arab side, beside where we are now, the old city where the wall is and where Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak and Qubbat Al-Sakhra Al-Musharrafah, where the Isra and the Mi'raj it took place, and the north side of Jerusalem, north, the old city, and east was the Arab side, Palestinian Arab of Jerusalem, where those big buildings straight over there, west and south, that's the Yahudi side of the city of Jerusalem. Jerusalem, it's not divided anymore as it was before, so the wall is not really existed. The division wall that was dividing the city, it's not existed anymore. So everything within that Turkish wall, it's in the old city. Everything outside the wall, it's in the new city. So this is the Jewish cemetery here. Where the wall is the Muslim cemetery. Yes, and down in the valley called the Kidron Valley is the Christian cemetery. So Muslims, Christians and Jews, they choose their last sleeping to be here as they believe, and this is, we don't have any evidence or a record to prove it, that the judgment day will take place somewhere near this valley. So from here you can get a general idea how the city of Jerusalem it looks like. Most of the holy places are within the wall, and especially after lunch we will be going to visit that mosque with the gold dome. We call that mosque the Dome of the Rock, in Arabic Qubbat Al-Sakhra Al-Musharrafah. From there the Isra and the Mi'raj it took place. The second mosque with the black dome, we call it Al-Aqsa Mosque, and the whole area we call it Al-Aqsa, which is occupying an area of 36 acres of land. So you are at the east side of Jerusalem, the Palestinian side of Jerusalem. So you take pictures and then we meet on the bus. If you want to buy anything from these guys, he is selling 30 cards for $1. He is selling 3 bags for $10. We sell each bag $4, 3 for $10. Bag. That's the Russian Orthodox Church. रशियन वालों का ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये, जो ये गोल्ड It's straight to the गोल गुंबज में जो है ना इधर नजदीक आप देख रहे हो, many churches here. Many ये churches. रशियन ऑर्थोडॉक्स वाले जो है ना अपने क्रिश्चियन, वो लोगों ने ये चर्च बनाया हुआ है। और यहाँ जब हम घूमेंगे तो बहुत से चर्चेज जैसे नजर आएंगे जो रशियन when everybody is here.
Salman al-Farsi was buried on Jabal Zaytun. We call it the Mount of Olives in English. And we built a mosque. This is the old part of the mosque. The other part of it is the new. And while we are here, and when we are all here, we read Surah Al-Fatiha and Ruh al-Sahabi Salman al-Farsi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. इसमें इख्तिलाफ चला आ रहा है कि हज़रत सलमान फ़ारसी का असल मज़ार कहाँ है। इन लोगों का कहना ये है कि वो मज़ार आपका यहीं है और आप यहीं शहीद हुए थे, यहीं वफ़ात हुई थी और यहीं पर, मगर आप ज़ियारत करके आए हैं मदाइन में हज़रत सलमान फ़ारसी का की ज़ियारत करा के आए, तो ज़्यादा लोगों का और सारे मुहक़्क़ीन का कहना वही है कि सही वो है। और यहाँ बात यह है कि यहाँ आप थे और यहाँ आपका मकान था और आपका विशाल वहीं हुआ और इस जगह पर मस्जिद बना दी गई। तो आप फातिहा इस तरह हज़रत सलमान का नाम लेकर के फातिहा पढ़ दें। ग्रीन और वाइट जो है ना वो पैलेस्टाइन वाला भी। It's a Muslim cemetery. ये मुस्लिम कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है। It was from up there. Looking at the moment that we were actually looking down upon the city a bit earlier. We saw earlier. वुजू बना चुके हो सभी इधर चले आओ। वुजू इधर चले आओ। वुजू इसका बना हुआ हो इधर आ जाओ। वुजू बना हुआ है ऊपर चले जाओ। औरतें नीचे। वुजू बनाने के लिए और मर्द ऊपर जाओ, औरतें नीचे। और वुजू बना करके सामने वाले हिस्से में आओ। खाना खा लिया क्या है बाकी रखा है खाने का। पिछले गुम्बद से लो, पिछले का
हाजिर हुए हैं ये बताया उसी को मैं अभी इंग्लिश में उन्होंने बताया तो मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। बाकी सब जो पूरी हिस्ट्री है वो हजरत बताएंगे कि वसल्लम के मुँह मुबारक भी। ये पत्थर जो नज़र आ रहा है उसको सखरा पत्थर कहते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब में यहाँ तशरीफ़ लाए, जिसका ज़िक्र कुरान के 15वें पारे में है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने इस पत्थर के सामने आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि पत्थर के पास आकर के हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैका या सखरतल्लाह। तो पत्थर से एक ज़बान निकली और आवाज़ आई वालेकुमुस्सलाम या रसूल अल्लाह। वो ज़बान मुबारक का निशान अभी मैं आपको बताता हूँ यही दरवाज़े पर है। और ये पत्थर पहले मुअल्लक़ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहीं पर क़िबला बनाने का हुक्म हुआ, मगर ये दीवार कब से बनी? अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ अलैहिर्रहमा जो अपने ज़माने के ख़लीफ़ा थे, अपने बाल बच्चों के साथ आप तशरीफ़ लाए थे ज़ियारत के लिए। आपकी बच्ची या अहलिया हालत हमल में थी। ये मुअल्लक़ अद्धर पत्थर को देख करके उनका हमल वज़ा हो गया, गिर गया। इसलिए आपने सबसे पहले दीवार हज़रत अब्दुल अज़ीज़ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनवाई। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवाई। और इसी पत्थर के नीचे फिर 2 महराबें मस्जिद पहला क़िबला जो जिस तरफ नमाज़ पढ़ते थे तो उसको महराब इब्राहिमी कहते हैं, और दूसरा पत्थर महराब दाऊदी कहते हैं, और दूसरी महराब है अंदर ही, तो उसको महराब नबवी कहते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही मकाम पर महराज की शब में 1,24,000 अंबिया किराम को नमाज़ पढ़ाई थी। उस वक्त ये जगह खुली थी, बाद में ये सब तामीर हुई और तकरीबन 88 साल जैसे उन्होंने कहा है, मगर इब्न बतूता के सफ़रनामे में लिखा हुआ है कि 90 साल तक अंग्रेज़ों ने इस बैतुल मुक़द्दस में घोड़े बांधे और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे जंग करके ये कब्ज़ा लिया और उसके बाद मुसलमानों के हवाले किया। उसके बाद आपने उस बैतुल मुक़द्दस की दीवारें भी तोड़ दी। लोगों ने पूछा हुजूर ये दीवारें हिफाजत के लिए आप क्यों तोड़ रहे हैं? तो आपने अपने बहादुरी का इजहार करते हुए और तवक्कुल ज़ाहिर करते हुए फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत हम दीवारों से नहीं करते, तलवारों से किया करते। ये आपकी बहादुरी थी। आपका चिल्ला मुबारक भी बाहर गेट जहाँ से आए हम लोग उसी के करीब ही में वही गेट पर जहाँ से दाखिल हुए वहाँ 2 सहाबियों के भी मज़ार हैं। इस कोने पर जाएंगे, वहाँ बुराक जहाँ बांधा जाता था वो कमरा है और ये हुजरा है नीचे। आप चलेंगे आपको दिखाएंगे कहाँ से। We go down. They can touch drop from downstairs. हाँ, ये बाल मुबारक और हुजूर के कदम मुबारक के निशान इसी जगह पर है। तो वहाँ कदम हुआ के निशान का आपने लिखा है गेट पर ही सफ़ेद ज़बान की तरह हिस्सा निकला। कुछ तामीरी काम अभी नया हुआ है, इस पर ये कतबा लगा हुआ है। यही जबान ये सुराख है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए आसमान पर तशरीफ ले लेता है। ये है क़िबला दाऊदी। हाँ, क़िबला अव्वल इस तरफ पहले नमाज़ पढ़ते थे। हुजूर के ज़माने में उस तरफ क़िबला बदलने का हुक्म हुआ तो उस तरफ नमाज़ पढ़ते। ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर यही सुराख है जिससे आप ऊपर तशरीफ ले गए थे मेराज की शब। ज़बान मुबारक वो दरवाजे पर है, ये जो यहाँ सफ़ेद।
ये क़िबला दाऊदी है। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस तरफ नमाज होती। ये क़िबला महराब नबवी है। ये सखरा शरीफ ये मेरा हाँ वो जहाँ से उतरते हैं ये सामने क़िबला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हाँ दाऊद अलैहिस्सलाम ये जगह जो है जिधर सरकारी कायनात की सर मुबारक का निशान है इसमें। चलो भाई जल्दी चलो। एक्स्ट्रा रोल से આમ 1200 જોવા જાય પડે એમાં કીધું કામ જાઓ તો અમે જોઈને આવીએ માં के पास जाइए ना फिर कोई नहीं है। I give you दिया ना ये और नहीं है Tell me you have a roll with you until the bus. I will. यहाँ बाहर निकाल बाहर रख देना।
انا بقول له هذا يعمل الدعاء. We pray at the new Al-Aqsa, which is way up, where we stopped first, and the whole area, which is 36 acres of land, it's called Al-Aqsa. And that includes the Dome of the Rock, where the Mi'raj, it took place. So Al-Aqsa, or the mosque, call it Al-Aqsa. Al-Aqsa means, in English, the distance or the foremost mosque from Mecca. That's where our Rasul alayhi salam, when he made his night heaven journey, he came to Al-Aqsa, and this is what we read in Surah Al-Isra. Now, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, after he captured the city from the Christians, that was in 636, he went first up where we had been first, and he started searching for the rock called Moriah, till he found it. And after he found that rock, he built the first mosque. Then he came to Al-Aqsa here, and he started building it. He started building Al-Aqsa in 693, but his son Al-Walid is the one that he finished building Al-Aqsa. But this is the old Al-Aqsa. Way up above is the new Al-Aqsa. Al-Aqsa, yes. ये जो यहाँ जो हम खड़े हैं, ये पुरानी अल-अक्सा मॉस्क है, मस्जिद, ये पुरानी अल-अक्सा मस्जिद है। इसके ऊपर जो है वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे ने पूरी की। पहले उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू किया और उनको फिर आपके साहबजादे ने पूरी किया। पहले उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब आए इधर, तो मस्जिद अक्सा जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया था, वहाँ पहले उन्होंने ढूंढा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज कहाँ से किया था, और जब पत्थर वो मिल गया तो उसके आसपास उन्होंने वहाँ कॉर्डन करके वहीं मस्जिद बनाई, और फिर दूसरी मस्जिद यहाँ ऊपर से बनाई। So the Christians, or let me use this word, the Crusaders, when they captured and occupied our city, they did the same as they did with the other mosque. They came and converted Al-Aqsa Mosque into a church, and they have used it as a church from 1099 till 1187. When Salah ad-Din al-Ayyubi radiyallahu anh restored the city back from the Crusaders, the building was converted again to be a mosque. 1099 में To the history, and not only to the Muslim history, but to the Christian history, that the Crusaders, when they occupied our city, they came here after the siege, the city, and within the area of the mosque, they killed 90,000 Muslims were killed within the area of the mosque. ये बता रहे हैं कि जब क्रूसेडर्स यानी कि क्रिश्चियन यहाँ पर आए, उस वक्त वे लोगों ने मस्जिद के अंदर में 90,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। When Salah ad-Din al-Ayyubi radiyallahu anh restored the city back, he did not treat the Crusaders as they treated us, and he did not kill one civilian, but he gave them really the security and asked them to go back to their countries, and he did not kill one civilian. जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको फतेह किया, उस वक्त उन्होंने किसी भी क्रिश्चियन को या यहूदी को मारा नहीं, और सबको आज़ाद कर दिया। बोले कि आप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, और एक भी यहूदी को या क्रिश्चियन को मारा नहीं। इसके हालांकि वो लोगों ने पहले 90,000 मुसलमानों को यहाँ शहीद कर दिया था। When you get to see the new Al-Aqsa, which is built at the beginning of the 8th century, this is what you have been hearing in the news, that many Muslims were killed. When they start, demonstrating, resisting against the Yahudi, they open their fire
inside the mosque, and many tens of Muslims were killed inside the mosque. Now, That is the same mosque? we are going, sorry, Is it the same mosque? Yes. They fired when they were praying? yes, This is the same mosque. we have one in Hebron and many times in here. So an accident and resisting, but that was the one that you are referring to is the one was in Ramadan. Yeah, Ramadan. In Ramadan. Only Ramadan. That's right. That one was in Hebron, but we have also, when the Muslims resisted, demonstrated many times, and they were trying to hide inside the mosque. The soldiers came in and killed many of them. Anyhow, I don't want to enter in politics, and this is what you have been hearing, and watch all what was going on here in the TV. Now we're going here for a few minutes, see the mosque, the old mosque, then the muazzin will call the Muslims to pray, and in about 10 minutes, and then we have Salat al-Zuhr, inshallah, Salat al-Asr at Al-Aqsa. This gentleman, he works here. He wants to show you a part of the old mosque and do the dua for you. Have we got exactly the place? Okay, first good afternoon, and here the place where Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, he was praying with all the Prophet here. And here it was, the Qibla. The Qibla is not way to Mecca that time. Okay, the time the Prophet Muhammad is be where the Qibla is be Jerusalem. After the Prophet Muhammad praying here with all the Prophet, with Gabriel alayhi salam, okay, is change the Qibla. Not Jerusalem, way to Mecca. Okay? And this one here, this is the old mosque. This is the same talking about your guide. The guide, he speak nice. And this is the old part of the mosque. And this is the 6 meters down under the ground. The old mosque. The new one, okay, the time Al-Walid bin Al-Malik. But this is the time Umar ibn Khattab radiallahu anhu. And I want to show you now the place where Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, the door, when he come from Mecca, sent to heaven, from Mecca, Medina, sent to heaven, up to the sky with Al-Burak. You know what's mean Al-Burak? Horse. Okay? Then Prophet Muhammad come down here this way, and now I want to show you the door, exactly the Prophet Muhammad when he come inside. توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولعماتنا وبنات عماتنا وخالاتنا وبنات خالاتنا اللهم يا الله إنك سميع مجيب الدعاء اللهم جاءوك من الهند اللهم جاءوك من الهند فاغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم انزلهم نزلاء الكرماء يا رب العالمين اللهم ادخلهم الجنة يا رب العالمين اللهم ارحمهم واعف عنهم وبدل سيئاتهم بحسناتهم يا رب العالمين اللهم لا تدع في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا هديته ولا محروما إلا أعطيته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا أسيرا ولا معتقلا مؤمنا إلا فككت أسره يا الله اللهم من أراد للإسلام خيرا وفقه عنه ومن أراد للإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اخسف أمريكا وإسرائيل ومن والاهم اللهم اجعل تدميرهم في نحورهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم أهلك النصارى اللهم أهلك اليهود أعداءك أعداء الدين ربنا تقبل منا
صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك غفور رحيم. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لطفا بأطفال الحجارة، اللهم لطفا بأطفال الحجارة. اللهم نصرك القريب الذي بايعتنا به يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للنبي ولأمواتنا وأموات المسلمين مني الفاتحة. Brothers, when the Prophet Muhammad, look that door over there, okay? Brother, sister, look that door, the big one. This is the exactly. This is the place where Prophet Muhammad, he was sent to heaven from Mecca, Medina, sent to heaven up to the sky with Al-Buraq, and down here, come down here and meeting all the Prophet here. And Prophet Muhammad, that door exactly when he come into the mosque, he come from this way. जो अभी आप दरवाजा देख रहे हैं वो जो बंद किया विंडो के नीचे का, वहीं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए थे इसी मस्जिद में और यहाँ पे अंबिया किराम की मुलाकात हुई थी. And this one here, the place, this is the place where Al-Khalifa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anh, he was built the mosque wood. You know, because that time no stone, only wood. हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यहीं पे पहले मस्जिद बनाई थी लकड़े की. After that, you know, the Islam, okay, the Islam is changed. Not wood, take the wood off and put what? Stones. और उसके बाद जब तरक्की हुआ तो फिर हुजूर उसके बाद यहाँ पत्थर की मस्जिद बनाई गई. Okay, now let's go to the pray. इस सामने जो पुराने खंभे पक्के खंभों के दरमियान में ट्यूब के सामने नज़र आते हैं, यही हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने की पुरानी मस्जिद अक़सा है जो तहखाने के अंदर है, दूसरे तहते के नीचे है जो आप देख रहे हैं. ये तहखाना जो नज़र आता है ये तीसरा तहखाना, दूसरा तहखाना है. ये सामने जो मेहराब नज़र आती है ये मस्जिद अक़सा का वो पुराना हिस्सा है जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में मस्जिद बनी थी, उसी की ये मेहराब है. ये कमरा जो नज़र आ रहा है इसको मस्जिद बुराक कहते हैं. रिवायत में बात मशहूर है कि हुजूर का बुराक मुबारक इस जगह पर बांधा गया था और ये 2 मंजिला 3 मंजिला नज़र आता है, गहरा है. अस्सलाम वालेकुम. तालिब दुआ सैयद नूरुद्दीन अशरफी.
ये मस्जिद, ये मंज़र जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद अक्सा का ऊपर का मंजिला है। नीचे तहखाना आप पहले देख चुके हैं। ये ऊपर में लाखों रुपया खर्च करके रंग बिरंगी बिलोरी कांच और सोने के पानी से हसीन जमील ये मस्जिद की तामीर असर नौ हो रही है। अभी आधी मस्जिद का काम हुआ है और आधी मस्जिद का काम बाकी है। बाकी काम भी इस तरफ आप देखेंगे जो आपको नज़र आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तालिब दुआ सैयद नूरुद्दीन अशरफी। ये सामने मेहराब में देखिए लिखा हुआ है सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम। सबसे पहले अब्दुल्ला, वलीद, यूसुफ और बाद में मुज़फ़्फ़र मलिक नासिर, सलाहुद्दीन, ये सब के नाम बादशाहों के लिखे हुए हैं जो आप मेहराब में अरबी ज़बान में लिखा हुआ देख रहे हैं। फ़क़त वस्सलाम सैयद नूरुद्दीन अशरफी। चलो चलो बैठेला અમારો ગ્રુપ એવા બસમાં જાય છે હવે મારે ગ્રુપ અલગ કરી દો બસ સ્ટાર્ટ કરી Over there in the distance, above that hill, is the city of Bethlehem, and Bethlehem is the place where Jesus or Hazrat Isa alayhi salam was born. But due to Israeli control of this area, the Israelis will not allow any visitors into the city. Even though Palestinians live there, they won't allow any visitors in. Basically, the city is under siege by the Israelis. That's where Bethlehem is over there. I'm just going to pan around so you can see the rest of the area. Problems going on in the area here, especially after sunset. Over that hill over there is Jerusalem, where we just come from. That you can see over there is Israel, or the Jewish quarter of Jerusalem. And the pan around over here, that is the Palestinian quarter of Jerusalem, the city of Jerusalem. All that you can see over there is the Jewish part of Jerusalem. Can't see it anymore. It's the Tower of David and then Jaffa Gate. So around this wall we have 8 gates. 7 of these gates are open, but we have one gate, it's closed, which is the Golden Gate. Okay, this road that we're on now, this used to be... जो रास्ते पे हम जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो रास्ता पहले 1967 के वॉर से पहले नो मैन जोन था, यानी कि यहाँ किसी की भी हुकूमत नहीं थी। मगर अब ये एक तरफ जॉर्डन था, एक तरफ इजराइल था। मगर अब यह है कि ये इजराइल में आ गया है और ये जो दीवार है तो वहाँ पे 8 गेट है, जिसमें से 7 खुले हैं, एक बंद कर दिया है, जो जिसको गोल्डन गेट कहते हैं। We are going to the hotel. Near your hotel we have a mosque. If you would like to pray Salat al-Maghrib or Isha, either in the hotel or in the mosque,
near, beside your hotel. As you may have guessed, now we're in we're in the Jewish quarter. We've just gone round. To the right in a minute you can see the new gate. The new gate. We've just gone round the three walls of the western of the old city. So this is the third wall that we're on now. We are coming to the East Jerusalem, the Palestinian side of the city of Jerusalem where we are now. To the right you could see Damascus Gate, one of the 7 gates that is open. दमास्कस गेट है इसे? Yes. ये जो गेट है दीवार में लगा हुआ वो दमास्कस गेट है जो खुला हुआ है. दमास्कस गेट. दमिश्क गेट. Babi Damishq. أيوة هو بالدمشق. That there you can see that is Herod's gate. In about 6-7 minutes we will be right in the hotel. Would you like a morning wake up to pray Salat al-Subh? नीचे गया.
We just entered through security now and we're heading towards the western wall, or the Jews call the Wailing Wall. We call it the Al-Buraq Wall. We're heading that way now. Muslims, we call it Al-Buraq Wall because Ar-Rasul alayhi salam, when he made his night heaven journey from Mecca to Jerusalem, he came on an angel, used to have a face of a horse. He left it at the wall and went behind and ascended into heaven. This is one of the this is really a holy, or one of the most Jewish holy places in the whole world. The Jews, they call it the Wailing Wall or the Western Wall. They call it the Wailing Wall because this is the place where the Jews, they come here to wail from crying, and they pray for the coming of the Messiah, as they do not believe in Isa in Nabi Isa alayhi salam that he came, so they are still waiting for him to come. Yes, they do not believe that he came. No, but Jews don't believe in Isa alayhi salam. He did not come. They are waiting for him to come. The one that he came, we believe that he came. Yeah. The Christians believes that he came, Yeah. but the Yahudi, they do not believe that he came. So they are waiting for him to come. Now, also they come here to pray for the destruction of their temple. Their temple was located, they say, little behind that wall where Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak is. That's why the Jews, they are trying to get inside and built a temple. अभी यहाँ जो खड़े हैं ये लोग, तो वहाँ बुराक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात यहाँ आए तो बुराक को वहाँ खड़ा किया था, वो जो दरवाज़ा है वहाँ पे। और जूस लोग इसको वेलिंग वॉल कहते हैं। रोना पीटना उनका यहीं पे होता है, और उनके लिए ये बहुत मुकद्दस जगह है यहूदियों के लिए। और ये उनका मानना ये है कि इनके पीछे जो मस्जिद अक्सा है वो उनका चर्च है। हालांकि ये बात उनकी गलत है, क्योंकि मस्जिद अक्सा तो अपनी मुसलमानों की ही है। और जूस यहाँ पे रोना पीटना इसलिए करते हैं कि वो लोग समझते हैं कि मसीहा इधर ही आएंगे। They call it also, the Jews, the Western Wall. Why? Because this wall is located to be at the western side where their temple was located. इसको वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं जूस लोग, क्योंकि ये वेस्टर्न की तरफ है, वेस्ट साइड की तरफ, इसलिए इसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। The first temple was built by King Solomon. The second built by Herod the Great. He was a Roman. पहला चर्च यहाँ, पहली मस्जिद यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। उसके बाद वो सेकंड वन By Herod. बाय हेरोड In the 1st century BC. 100 साल पहले BC, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु आए उससे पहले उनको बनाया था। But Titus, when he occupied Jerusalem, he was a Roman. He destroyed the city and he destroyed the second temple, and since that time it hasn't been rebuilt again. रोमन ने यहाँ पे कब्जा किया था, टाइटस ने, तो उन्होंने ये दूसरा चर्च जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, गिरा दिया था। उसके बाद से वो चर्च बना नहीं है। So the lower part of the wall dates back to the Roman period of the 1st century. The bottom one. The upper part is Turkish. वो नीचे वाला जो हिस्सा है वो रोमन का हिस्सा है, रोमन ने बनाया था, और ऊपर का हिस्सा है वो तुर्की लोगों ने बनाया था। When the Jews come here to pray, women go to one section
and the men go to the other section. They are not allowed to get mixed together like Muslims in the mosque. ज्यूज जब यहाँ आते हैं अब इबादत करने के लिए तो औरतें इधर राइट की तरफ बैठती हैं और मर्द लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, दोनों मिक्स नहीं होते हैं. It's now 9 o'clock. I want to give you 10 minutes to get pictures closer down. Take pictures. Then after 9 we leave here. 10 मिनट आपको दिया जाता है वहाँ इसमें क्या ये दीवार का इनको माने रखा है? ये नीतियों ही में एक बात ऐसे महीने पीछे है तो महीना तो masih देखो दूसरी भी इस तरह और सिर पछाड़ हो दे इधर देखो बचा हमको लगता भी नहीं खाली खाली पछाड़. नहीं ऐसे मन्नत नहीं है यहूदी लोग हैं, ये लोग कहते का हमारा है. लगता नहीं दीवार पे खाली खाली यूज करता है. तो ऐसा भी करता है ना. हाँ यूँ मतलब ढूंढते ये तो हाजिर देते कहाँ गई?